अगर आप लॉग इन ही नहीं हो तो आप अपनी प्रोफाइल को कैसे अपडेट कर सकते हो, जो कि इम्पॉसिबल है। बट फॉर अस एज हैकर्स दैट विल पॉसिबल, and that will also come in future lessons. As I told you that any changes, any updations you want to do to your existing information, that will be done by put request. Server is not accepting the delete method with your request, and then this error most likely to come across. Hello everyone and welcome to the new video, and in this video we are going to cover a new topic, that is HTTP in detail, that is Hypertext Transfer Protocol. And as you can see that with each step we eventually take ourselves to becoming a better hacker. तो अगर आपका अल्टीमेट गोल बग बाउंटी है, उसके लिए भी ये बेसिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप मान लीजिए पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हो या साइबर सिक्योरिटीज़ में अपनी एक जॉब लैंड करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज वी आर covering our roadmap from start to finish. As you know that we are covering our cybersecurity learning roadmap on TryHackMe. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये जो जितने भी हमारे पास लैब्स हैं और जितने भी हमारे पास ये रूम्स हैं, दैट इज़ अपकमिंग, will become more interesting in future lessons. So before any further ado, let's get into this chapter, that is HTTP in detail. As you can see, this is also not a premium room. So if you want to follow along with me, you can open this video on another tab or in a separate tablet and work your way through this room. So what is HTTP and bracket में S, that is Hypertext Transfer Protocol, जो कि पोर्ट 80 के ऊपर हमारा ऑपरेट करता है। लेकिन अगर हम HTTPS कर देते हैं तो ये उसी का सिक्योर वर्जन होता है, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, जो कि पोर्ट 443 के ऊपर ऑपरेट करता है। सो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक बटन है व्यू साइट का, बट लेट्स फर्स्ट रीड व्हाट्स इन दिस। What is HTTP? That is Hypertext Transfer Protocol. HTTP is what's used whenever you view a website. Developed by Tim Berners-Lee and his team between 1989 to 1991. HTTP is the set of rules used for communicating with web servers for the transmitting of web page data, whether that is HTML, images, videos, etc. तो जो HTTP जो हमारा है, वो कोई भी वेबसाइट को व्यू करने के लिए ब्राउज़र के अंदर यूज़ होता है, जो हमारा प्रोटोकॉल है HTTP, और जिसको बनाया था टिम बर्नर्स ली ने। नाउ व्हाट इज HTTPS? दैट इज Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS is the secure version of HTTP, and HTTPS data is encrypted, so it not only stops people from seeing the data you are receiving and sending, but it also gives you assurances that you are taking to the correct web server and not something impersonating it. Now, let's answer the questions. What does HTTP stands for? That is Hypertext, if I can write, Transfer Protocol. Next question. What does the S in HTTPS stands for? That is secure. On the mock web page on the right, there is an issue. Once you have found it, click on it. What is the challenge flag? Now let's go to our view site button and let me press it. There is a logo of TryHackMe and it says welcome to TryHackMe. That is operating on HTTP, that is not secure. And if we see, yes, this is our flag. So that's what's the issue in this website, that it's not secure. So that lock with a slash over it with the red shows that this is not secure. Now let's copy this flag and paste it inside our box.
Now let's go to our task 2, that is request and responses. When we access a website, your browser will need to make requests to a web server for assets such as HTML images and download the responses. Before that, you need to tell the browser specifically how and where to access these resources. This is where URLs will help. What is a URL? That is Uniform Resource Locator. If you have used the internet, you have used a URL before. A URL is predominantly an instruction on how to access a resource on the internet. The below image shows what a URL looks like with all of its features. It does not use all features in every request. So make sure that you are taking good notes, and if you want to make a screenshot of this image, you can do it now. Let me zoom in a bit so that you can see it clearly. So हमारे URL के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये जो सबसे पहले है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, HTTP, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज़ दिस स्कीम, एंड दिस इज़ द यूज़र फील्ड in which we can see the username and password, and what is the domain, that is tryhackme.com, and 80 is the port. You can see this is how we can specify the port. And you also know that HTTP operates on 80, that is not secure. If there is HTTPS, the port would be 443. Now the path, that is view room, and the ID, and last क्या है ये, फ्रेगमेंट. तो ये जो ID इज इक्वल टू 1 जो क्वेरी स्ट्रिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रूम in web vulnerabilities. You will come across IDORs, that is insecure direct object reference. Whenever you are in an engagement and you see this parameter, that is ID is equal to 1, you will likely to change it to 2, 3, 4 and so on. और अगर जो हमारा वेब पेज है वो किसी और यूज़र के रिसोर्सेज या किसी और यूज़र की जो थिंग्स है वो आपको शो करता है वेब पेज के ऊपर, दैट मीन्स you have successfully find an IDOR that we are come across in our future lessons. So you have to wait for that, and let's go further. Now these are the explanation of these things that we see in our URL. So what is a scheme? This instructs on what protocol to use for accessing the resource, such as HTTPS, HTTP, FTP, that is file transfer protocol. User, which means this field. Some services requires authentication to login. You can put a username and password into the URL to login. तो कुछ सर्विसेज है हमारे पास जहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड हमें मैंडेटरी होता है, तो उस केस में हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो कि है वो यूआरएल में हमें स्पेसिफाई करना होता है लॉगिन करने के लिए. होस्ट, द डोमेन नेम ऑफ आईपी एड्रेस फॉर द सर्वर यू विश टू एक्सेस. सो ये डोमेन होस्ट सेम चीज़ होती है. मान लीजिए tryhackme.com को हमें एक्सेस करना है तो यहाँ पे उसी वेबसाइट का नेम आएगा. पोर्ट, the port that you are going to connect to, usually 80 for HTTP and 443 for HTTPS. But this can be hosted on any port between 1 to 65,535. तो यूजुअली हमारी जो वेबसाइट्स होती है वो या तो 80 के ऊपर होती है या फिर 443 पोर्ट के ऊपर होती है. ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो एडमिन है जो कि जिसे भी अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है वो 1 से लेके 65,535 पोर्ट्स के बीच में कोई भी एक पोर्ट चूज़ कर सकता है अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए. नाउ लेट्स गो फर्दर. द पाथ, द फाइल नेम और लोकेशन ऑफ द रिसोर्स दैट यू आर ट्राइंग टू एक्सेस. तो ये पाथ होता है उस रिसोर्स का. जैसे कि मान लीजिए आपको आपने इमेज सर्च करी है तो ये जो पाथ है ये उस इमेज का पाथ होगा. नाउ क्वेरी स्ट्रिंग, extra bits of information that can be sent to the requested path. For example, slash blog, uh, ये जो ये फील्ड है स्लैश ब्लॉग आईडी, दैट मीन्स ब्लॉग के अंदर जो भी आईडी 1 होगी जिस भी ब्लॉग की ये हमें वो देगा. would tell the blog path that
you wish to receive the blog article with the ID of 1. Now fragment. This is a reference to a location on the actual page requested. This is commonly used for pages with long content and can have a certain part of the page directly linked to it. So it is viewable to the user as soon as they access the page. Now making a request. जब आप एक रिक्वेस्ट करते हो अपने ब्राउज़र से वेब सर्वर की ओर तो क्या होता है? लेट्स सी. It's possible to make a request to a web server with just one line get http 1.1. तो ये जो get है ये मेथड होता है जैसे get post put update delete that are methods and this is the protocol with the version 1.1. और ये जो प्रोटोकॉल वर्जन है हम सीखेंगे कि इसे भी कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जो भी हमारे अपकमिंग चैप्टर है वो उसमें because exploiting http is not the scope of this video. We are in our learning stage, so we must go step by step. So the request method, this is the get thing is the request method and this thing http that is the http protocol version. और ये दोनों मिलके क्या करते हैं द पेज being requested जो भी हमने पेज रिक्वेस्ट किया है वेब सर्वर से. But for a much richer web experience, you will need to send other data as well. This other data is sent in what is called headers, where headers contain extra information to give to the web server you are communicating with. But we will go more into this in the header task. तो अगर हमें किसी वेबसाइट को हमने रिक्वेस्ट किया है, उसके अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन को हमने रिक्वेस्ट किया है, तो सिर्फ इस जो ये वाला लाइन है, सिर्फ इससे हमारा पूरा वेब पेज नहीं आता, तो हमें उसके साथ कुछ हेडर्स भी सेंड करने पड़ते हैं. तो वो हेडर्स ये होते हैं जैसे कि होस्ट, यूज़र एजेंट, रेफरर. तो होस्ट जो है ये अभी हमने देखा था कि जो भी वेबसाइट है वो होस्ट होता है. यूज़र एजेंट मोज़िला फायरफॉक्स. अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो वेब ब्राउज़र तो यहाँ पे क्रोम आएगा. तो वो हमारा ब्राउज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो बताता है यूज़र एजेंट. रेफरर रेफरर होता है कौन सी वो वेबसाइट है जो आप विजिट कर रहे हो. And now let's see, here is the breakdown. Line 1, that is this line. This request is sending the get method. More on this in the http methods task. Request the home page with slash and telling the web server we are using http protocol version 1.1. तो ये जो स्लैश है ये एक पाथ होता है. इन दिस केस this is the home page or index page of the website that we are requesting. Now line number 2. We tell the web server we want to visit tryhackme.com. Now this one. What website that we want to visit, that will be our host. Line number 3. We tell the web server we are using the Firefox version 86 browser. As I told you that user agent is the browser that you are using. Line number 4 is we are telling the web server that the web page that referred us to this one is this. जो भी हमें वेब पेज मिला है वो ये वाली इन्फॉर्मेशन होती है हमारी रेफरर की. तो ये हेडर्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम आगे जाके किसी वेबसाइट को हैक करेंगे तो उसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं, बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं हम उनको मैनिपुलेट करते हैं. तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है. आप इन चीज़ों का नोट भी बना सकते हो. एज आई टोल्ड यू दैट प्लीज़ कीप टेकिंग नोट्स एज वी गो टू दीज लेसन्स because notes are very important for our learning. Line number 5. HTTP requests always end with a blank line to inform the web server that the request has finished. तो ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप खाली स्पेस है, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है हमारे यहाँ हमारी जो हेडर्स हैं. ये बताता है कि वेब सर्वर की जो भी रिक्वेस्ट हमने सेंड की थी सर्वर को वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है. जब हम इसे बर्प सूट जो कि हमारा एक प्रॉक्सी टूल है, लेट मी हियर इज द टूल दैट इज काइडो. हम बीच बीच में काइडो भी यूज़ करेंगे आने वाले लेसन्स में और हम बर्प भी यूज़ करेंगे जो कि ये बर्प है. तो जब हम बर्प के थ्रू
कोई भी हमारी वेबसाइट होगी, जब उसको हम एक्सेस करेंगे और उसकी रिक्वेस्ट को हम प्रॉक्सी में जब इंटरसेप्ट करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक स्लैश एन करके होता है। अगर आप देखें तो जो हमारी ये रिक्वेस्ट है, मैं बताता हूँ आपको ये कैसे होती है। अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, when we are seeing this request in proxy tool, that will be like this न्यू लाइन। तो इस तरह से न्यू लाइन होती है इनके बीच में, जो कि एक से यहाँ पर स्विच होता है, टॉगल स्विच वर्ब के अंदर, जिसको अगर आप प्रेस करते हो तो ये चीज़ें आपको दिखाई देती है और हाइड हो जाती है। सो नाउ लेट्स गो फर्दर। एग्जांपल रिस्पांस HTTP 101, that is the version of the HTTP protocol. 200 OK, that is your response is positive, and that is OK response. These are some of the status codes and that we are going to come across very likely. Now the server that the website is using, that is Nginx 1.15.8. This is the date, this is the content type, this is the content length, and content type is text HTML. That is, we are receiving a HTML document, and the length of that document is 98. Line number 1, HTTP 1.1 is the version of the HTTP protocol the server is using, and then followed by the HTTP status code, that is 200. OK, which tells us the request has completed successfully. That's what I want to say, but I don't have the words to say that thing. Line number 2, this tells us the web server software and version number. So this is the web server and this is the version, and we can also check online if there is any exploit for this version, so that we can compromise the website. That will also come in future lessons. Now line number 3, the current date, time and time zone of the web server. Line number 4, the content type. Header tells the client what sort of information is going to be sent, such as HTML, images, video, PDF, XML, and many more. Line number 5, content length, tells the client how long the response is. This way we can confirm on data is missing. Line number 6, HTTP response contains a blank line to confirm the end of the HTTP response. Line number 7 to 14, the information that has been requested, in this instance the home page. So जो ये ब्लैंक स्पेस है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू लाइन जो मैंने बताया था स्लैश एन, जो कि न्यू लाइन इंडिकेट करता है, वो चीज़ होती है जो कि हम देखेंगे बर्ब में, जो कि हमारा प्रॉक्सी टूल है। बट अगर मैं आपको अभी बर्ब ओपन करके दिखा दूंगा, दैट विल बी वेरी ओवरवेलमिंग। नाउ लेट्स आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। What HTTP protocol is being used in the above example, that is HTTP 1.1. What response header tells the browser how much data to expect, that is content length. और ये केस सेंसिटिव होता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट्स को मैनिपुलेट करेंगे आने वाले कुछ लेसन्स में, तो ये इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप इसका सी स्मॉल कर दोगे या लोअर केस कर दोगे तो वो चीज़ वर्क नहीं करती है। So that is case sensitive. Now let's go to the task 3, HTTP methods. HTTP methods are a way for the client to show their intended action when making a HTTP request. There is a lot of HTTP methods, but we will cover the most common ones. Although most you will deal with the get and post method. Get request. This is used for getting information from the web server. Post request. This is used to submitting data to the web server and potentially creating new records. Put request. This is used for submitting data to a web server
to update information. Delete request. This is used for deleting information slash records from a web server. तो जो गेट रिक्वेस्ट होती है उसका मतलब होता है कि हमने सर्वर से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है, मतलब वी आर रिक्वेस्टिंग सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर। अब अगर जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल जो है वो है, मान लीजिए आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो या फिर आप कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट कर रहे हो वेबसाइट के ऊपर, तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट विल गो टू द डेटाबेस। सो every request that stores data into the web server or into the database of the web server, that will be post requests। तो पुट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने पोस्ट के थ्रू कोई भी एक, मान लीजिए अपना जो ईमेल है आपने वो वेबसाइट के अंदर रजिस्टर किया है और अपनी नेम हो या फिर any information that you have submitted to the website, but if you want to change it or update it, मान लीजिए you want to update your phone number to another number, and at that point put request will come in effect. If you want to delete any information from the website, that you will then you will use the delete request. Now let's answer the questions. What method would be used to create a new user account? That will be post, because when you are creating an account you are eventually submitting the information to the database, and that will done by post requests. What method would be used to update your email address? That is put. As I told you that any changes, any updations you want to do to your existing information, that will be done by put request. What method would be used to remove a picture you have uploaded to your account? Removal matlab deletion, and that is delete. That is delete request. What method would be used to view a new article? That is get, because we are requesting information for a new article. Now let's go to our task 4, that is HTTP status codes. And this chapter is very important because we are most likely to come across with these responses. So HTTP status codes. In the previous task, you learned that when a HTTP server responds, the first line always contains a status code, informing the client of the outcome of their request and also potentially how to handle it. These status codes can be broken down into 5 different ranges. और देखते हैं वो रेंजेस क्या क्या हैं। तो जितने भी हमारे पास स्टेटस कोड्स होते हैं 100 से 199 के बीच में, दैट आर इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सेज। These are sent to tell the client the first part of their request has been accepted and they should continue sending the rest of their request. These codes are no longer very common. Now, 200 to 299, that are success codes. This range of status codes is used to tell the client their request was successful. तो जितने भी हमारे पास रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्सेज जो होंगे जो कि 200 से 299 के बीच में होंगे, that will tell us that your request is successful. Now 399 and 300, ये होते हैं हमारे redirection. These are used to redirect the client's request to another resource. This can be either to a different web page or a different website although. Now 400 to 499, client errors, used to inform that client that there was an error with their request. So ये client side errors होते हैं। 500 to 599 होते हैं हमारे server errors, means server side errors.
This is reserved for errors happening on the server side and usually indicate quite a major problem with the server handling the request. Now let's go to our common HTTP status codes. There are a lot of different HTTP status codes, and that is not including the fact that applications can even define their own. We will go over the most common HTTP responses you will likely to come across. तो ये जो हमारे स्टेटस कोड्स हैं अब ये हमें यूजुअली दिखाई देंगे जब हम अपनी एंगेजमेंट्स परफॉर्म करेंगे। तो दैट इज़ 200 जो कि आपको पता है, दैट इज़ सक्सेसफुल, द रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल। 201 that is created, a resource has been created, for example a new user or new blog post. 301 moved permanently. This redirects the client's browser to a new web page or tells search engines that the web page has moved somewhere else and to look there instead. 302 that is found. Similar to the above permanent redirect, but as the name suggests, this is only a temporary change and it may change again in the near future. 400 bad request. This tells the browser that something was either wrong or missing in their request. This could sometimes be used if the web server is source that is being requested accepted a certain parameter that the client did not send. 401 that is not authorized. You are not currently allowed to view this resource until you have authorized with the web application, most commonly with a username or and password. मान लीजिए कोई भी रिसोर्स है जो कि एक्सेसिबल है ओनली टू द users that have the account on that website, and if you are not authorized to that website, so you are most likely to see this error 401 that is not authorized. And I think I haven't explained this one. So क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक रिक्वेस्ट सेंड करी है लेकिन जो सर्वर है वो एक्सेप्ट कर रहा है एक पैरामीटर जो कि आपने अपनी रिक्वेस्ट के साथ सेंड नहीं किया है। तब जो है हमारे पास 400 एरर आता है जो कि है बैड रिक्वेस्ट। 403 दैट इज फोरबिडन। यू डू नॉट हैव परमिशन टू व्यू दिस रिसोर्स वेदर यू आर ए लॉग्ड इन और नॉट। तो मान लीजिए आपके पास 403 आता है, तो चाहे आप लॉग्ड इन हो या लॉग्ड इन नहीं हो, वो रिसोर्स आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। 405 दैट इज मेथड नॉट अलाउड। मान लीजिए आपने गेट पैरामीटर जो है उसकी जगह पे पोस्ट पैरामीटर सेंड कर दिया है जो कि अलाउड नहीं है, तो आपके पास जो है 405 एरर आता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर गेट और पोस्ट ही हो, वो कोई भी मेथड हो सकता है। मान लीजिए आपने डिलीट मेथड सेंड कर दिया हो लेकिन सर्वर इज नॉट एक्सेप्टिंग द डिलीट मेथड with your request, and then this error most likely to come across. 404 that is page not found. The page resource you requested does not exist. मान लीजिए आपने कोई पेज रिक्वेस्ट किया है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपके पास 404 एरर आता है। नाउ 500 that is internal server error. The server has encountered some kind of error with your request that it does not know how to handle properly. तो जो 500 एरर है ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरर है समझने के लिए। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट के ऊपर एक सर्च फील्ड थी और उसके ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करने की जगह आपने एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड इनपुट डाल दी और सर्च के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अगर वो हिट कर जाता है आपकी एसक्यूएल दैट इज़ सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज के साथ, तो वो जनरली 500 एरर जो है वो हमें देता है और इससे कि हमें बहुत बड़ी इंडिकेशन मिलती है दैट दिस वेबसाइट इज़ मोर लाइकली वल्नरेबल टू सीक्वल इंजेक्शन। तो ये एरर जो है 500 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरर है और हम इसे आने वाली कुछ रूम्स में लैब्स में समझेंगे। 503 दैट इज सर्विस अनअवेलेबल। दिस सर्वर कैन नॉट हैंडल योर रिक्वेस्ट एज इट्स आइदर ओवरलोडेड और डाउन फॉर मेंटेनेंस। If you are a visual learner, also check out a great http.cat resource to study status codes.
Now, click the view site button on the right to see what some of these HTTP status messages look like in a browser. पहले हम ये देख लेते हैं. Let's click on this link. This is a website, HTTP cats. Here you can see some of the status codes. Let me click on this. So this is uh, so these are some of the status codes that you can learn by going this website http.cat. I really want to click on these. So let's click on these. 101 switching protocol. You can read this description if you want to go deep inside the status codes, but going deep inside in the status codes is not the scope of this video. So let's go back to our TryHackMe room. Now let's click on the view site button and we have to answer some of the questions. What response code might you receive if you have created a new user or blog post article? तो जो भी क्रिएशन होता है, मान लीजिए कोई न्यू यूज़र रजिस्टर हुआ है, तो उसके लिए जो है हमारा स्टेटस कोड होता है 201. तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप कुछ भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें जो स्टेटस कोड जो होता है हमारा वो 201 होता है. What response code might you receive if you have tried to access a page that does not exist? तो अगर आप कोई पेज एक्सेस करना चाहते हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके लिए आपको पता है 404 एरर आता है हमारे पास. हम यहाँ से भी देख सकते हैं, मान लीजिए 404 के ऊपर क्लिक किया हमने, तो ये बता रहा है द रिक्वेस्ट यूआरएल मिसिंग एचटीटीपी नॉट फाउंड ऑन द सर्वर. सी, नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर. What response code might you receive if the web server cannot access its database and the application crashes? So that is here 503. And this is the description. So here we have to write 503. What response code might you receive if you try to edit your profile without logging in first? तो ये हमारा अनऑथोराइज्ड में आ जाता है. अगर आप लॉग इन ही नहीं हो तो आप अपनी प्रोफाइल को कैसे अपडेट कर सकते हो, जो कि इम्पॉसिबल है. बट फॉर अस एज हैकर्स दैट विल पॉसिबल एंड दैट विल ऑल्सो कम इन फ्यूचर लेसन्स. सो फॉर नाउ इट्स 401. आई थिंक yes. Now let's go to our task 5, that is headers. Headers are additional bits of information you can send to the web server when missing when making requests. Although on headers are strictly required when making a HTTP request, you will find it difficult to view a website properly. Common request headers. These are headers that are sent from the client, usually your browser, to the server. Host. Some web servers host multiple websites, so by providing the host headers, you can tell it which one you require. Otherwise, you will just receive the default website for the server. User agent. This is your browser software and version number, telling the web server your browser software help it format the website properly for your browser, and also some elements of HTML, JavaScript and CSS are only available in certain browsers. Content length. When sending data to a web server, such as in a form, the content length tells the web server how much data to accept in the web request. This way, the server can ensure it is not missing any data.
Accept encoding tells the web server what type of compression methods the browser supports so that data can be made smaller for transmitting over the internet. Cookie data sent to the server to help remember your information. Common response headers. These are the headers that return to the client from the server after a request. Set cookie information to store which gets sent back to the web server on each request. Cache control. How long to store the content of the response in the browser's cache before it requests it again. Content type. This tells the client what type of data is being returned, that is HTML, CSS, JavaScript, images, PDF, video, etc. Using the content type header, the browser then knows how to process the data. Content encoding. What method has been used to compress data to make it smaller when sending it over the internet? Now let's answer the questions. What header tells the web browser what browser is being used? So that is user agent, and that is case sensitive. What header tells the browser what type of data is being returned? That is content type, that tells the type of the data. What header tells the web server which website is being requested? That is host. Now let's go to our task 6, that is cookies. You have probably heard a cookies before. They are just a small piece of data that is stored on your computer. Cookies are saved when you receive a set cookie header from a web server. Then every further request you make, you will see the cookie data back to the web server. Because HTTP is stateless, does not keep track of your previous requests, cookies can be used to remind the web server who are you. Some personal settings for the website or whether you have been to the website before. Let's take a look at this as an example. As an example, HTTP request. तो जो कुकीज़ होती है, वो किस तरह वर्क करती है? मान लीजिए अगर आपने किसी वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करी है, वहाँ से जो रिस्पॉन्स में आपको सेट कुकी जो हेडर है, वो सेट हुआ मिलता है। दैट मीन्स यू आर द वेबसाइट और द वेब सर्वर इज़ यूजिंग ए कुकी। और कुकी का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि आपको रिमेंबर करके रखना। मतलब अगर हम कुकी सेट ना करें, तो आपको हर एक रिक्वेस्ट में लॉगिन करना पड़ेगा। जो कि ड्रॉबैक है एचटीटीपी का, क्योंकि एचटीटीपी जो है वो स्टेटलेस है। स्टेटलेस का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी आपकी सेशन का, जो भी आप सेशन क्रिएट होगा जब आप लॉगिन करोगे, उसका वो ट्रैक नहीं रखता। सो अगर आपको बार-बार ये हर्डल जो है फेस नहीं करनी है कि आप हर एक एक्शन पे, मान लीजिए आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक कर रहे हो, तो आपको लॉगिन करना पड़ रहा है। अगर आप ऑथोराइज्ड कंटेंट अ, ब्राउज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर कुकीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब देखते हैं एग्ज़ाम्पल कुकी का। सो दिस इज़ दैट वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस टास्क, द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। तो ये है होस्ट कुकीज़ डॉट टीएचएम, जो कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करा है वेब पेज। अब नेक्स्ट जो है, this is the HTTP protocol, this is the server, this is the date, content type that we know. The server responds back with a single web page with a form asking for the user's name. Okay, that will in this maybe HTML data. तो उसके बाद हमने उसे HTML डेटा जो है वो नेम दे दिया, जैसे कि नेम इज इक्वल टू एडम। तो क्या हुआ है, दिस क्लाइंट सेंड्स बैक द फॉर्म विद द नेम सेट टू एडम। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जो यहाँ पे गैप आ रहा है,
यहाँ पे एक स्लैश एन होता है, न्यू लाइन। अब जैसे ही हमने वेब सर्वर को नेम सेंड किया, तो उसने उसी नेम की कुकी बना दी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यूजुअली कुकी ऐसी होती नहीं है। कुकी एक रैंडम करैक्टर होता है, रैंडम सेट रैंडम सेट ऑफ करैक्टर्स होता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। The server responds with a set cookie header telling the client to save the data name is equal to Adam. So यहाँ पर वो कुकी सेट हो चुकी है। अब कुकी जो है वो नेम इज इक्वल टू एडम है। ऑन द नेक्स्ट एंड एवरी फर्दर रिक्वेस्ट द क्लाइंट सेंड्स द कुकी डेटा बैक टू द सर्वर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब जितनी भी जो इंटरेक्शंस है यूज़र करेगा वेबसाइट के साथ, with each request that user send or interact with the website, this cookie will be sent with each request. The server then sees the cookie data, and instead of displaying the form, it displays a welcome back message instead. Cookies can be used for many purposes, but are most commonly used for website authentication. The cookie value won't usually be a clear text string where you can see the password, but a token, यूनिक सेट ऑफ कोड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कुकी है, जो यहाँ पे ये इस तरह से नहीं होती है। ये एक रैंडम सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जो कि काफ़ी लेंथ में बड़ा होता है। व्यूइंग योर कुकीज़, आपको कुछ नहीं करना है। आपने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन मेमोरी, नॉट मेमोरी, एप्लीकेशन, एंड देन you have to see this thing, that is cookies, and you can see all the cookies that is currently in use. So what header is used to save cookies to your computer? That is set cookie. Now let's go back to our final task, that is task 7, making requests. Click the view site button on the right. This is an emulator for making demo HTTP requests using what you have learned from the above tasks. You can use it to complete the questions below. Make a get request to slash room page. So we have to click on the view site button. This is the tour guide. Would you like to take a guided tour? Skip. No, we don't want. Now what we are seeing here is the method that we can change, and this is the URL, and this is also called the host or domain. तो फर्स्ट हमारे पास क्या टास्क है? We have to make a get request to slash room page. Now get request is already set. Maybe we have to append that room here. Let's see. Let's click on go, and this is the request that we have sent to the server, and this is the response that we get from the server, and the response we get is this: you are in the room. अब अगर आप इस रिक्वेस्ट को समझो, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमने इस होस्ट नेम को, जो कि हमारा होस्ट है, हमने गेट रिक्वेस्ट से हमने इस रूम को रिक्वेस्ट किया। तो कि जो रिक्वेस्ट बनती है हमारी, वो ये बनती है गेट। क्योंकि हमने यहाँ पे रूम को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमारा पाथ आता है, जो चीज़ हम एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रोटोकॉल और उसका वर्जन। उसके बाद होस्ट, जिस वेबसाइट के अंदर हमने रूम को रिक्वेस्ट किया। यूज़र एजेंट, जो आपको पता है, मोजिला फायरफॉक्स। कंटेंट लेंथ अभी यहाँ पर 0 आ रहा है, क्योंकि अभी कंटेंट कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद जब रिस्पॉन्स आता है, दैट इज़ 200 ओके। तो जो भी सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो 200 ओके होते हैं। और सर्वर, जैसे आपको पता है, दिस इज द डेट, दिस इज द कंटेंट टाइप, दैट इज टेक्स्ट HTML, द कंटेंट लेंथ दैट इज 252, एंड दिस इज what we got. And let's answer this question. Now
Now the next question is make a get request to blog page and set the ID parameter to 1. Note, use the gear button on the right to manage the URI parameters. तो अब हमें गेट रिक्वेस्ट के थ्रू स्लैश ब्लॉग और ब्लॉग के अंदर आईडी 1 का जो ब्लॉग है वो रिक्वेस्ट करना है वेब सर्वर को। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम वो। तो ये हमारा गेट ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्लॉग, दैट इज द पाथ, एंड मे बी वी हैव टू राइट क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल टू 1। और ये आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो कि आईडी आपने क्या रखनी है। वो जैसे कि ऑटोमेटिकली आ गया है क्योंकि मैंने यहीं पर आईडी को लिख दिया है। तो इसको हम सेव कर देते हैं एंड लेट मी सेंड दिस रिक्वेस्ट। तो अभी आप देख पा रहे हो हमारा जो पाथ है वो चेंज हो चुका है, ब्लॉग आईडी इक्वल टू 1। और हमें क्या रिसीव हुआ है, THM यू फाउंड द ब्लॉग। और ये चीज़ें अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी तो आपको पता होगा कि ये क्या है। लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। Make a delete request to user 1. Let's copy this and let's get back to our methods. Select delete and then remove the blog, paste it here, user slash 1. Let's send this request and request is not going well. Now what's wrong? Maybe this space is wrong, that what we are, this one, you can see this one, this space. Let's see if we can get the response without space. Yes, we got the answer, that is THM user is deleted. Let's answer this question. Make a put request to user 2 page with the username parameter set to admin. Note, using the gear, so this is also something that we have to learn. आप अब देख पा रहे हो कि किस तरह से ट्राई हैकमी जो है हमें गेमिफाइड जो लेसन्स है उनके थ्रू ट्रेन कर रहा है हमारे आगे आने वाली एंगेजमेंट के लिए, जो कि रियल वेब्स के अंदर भी आप सेम जो मेथडोलॉजी है वो यूज़ कर सकते हो। ये सेम चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, यही हमें देखने को मिलेगी अपने प्रॉक्सी टूल के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा गेमिफाइड हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं समझने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हमें आगे आने वाली है। तो देखिए अब कैसे यहाँ पर हम चेंज करते हैं। लेट्स चेंज इट टू पुट मेथड एंड व्हाट वी हैव टू डू, we have to request to user 2. So now let's change it to user 2, and what we are going to do here is set the username is equal to admin. यूजरनेम की वैल्यू हम सेट करेंगे एडमिन। तो सेव करते हैं और इसे हम, अब आप देख पा रहे हो, देख यहाँ पे हमने जो पुट मेथड है, अगर आप बर्ब प्रॉक्सी यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब प्रॉक्सिंग टूल यूज़ कर रहे होते, या बर्ब प्रॉक्सी या फिर काइडो आप यूज़ कर रहे होते, तो आप क्या करते, यही सेम चीज़ करने के लिए आप इस जगह पर ये सेम चीज़ करते, गेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके पुट करते और यूज़र नेम को आप यहाँ पर इस तरह से जो पाथ है उसको एक्सेस करते, और उसके बाद जो भी हमारा पैरामीटर है जो हमने सेट करना है, जैसे यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिन, दैट यू हैव टू सेट लाइक दिस, यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिन। तो ये सारा का सारा अभी हम इसके थ्रू कर रहे हैं, बट आपको इस तरह करना भी आना चाहिए सो दैट यू कैन यूज़ योर प्रॉक्सी टूल efficiently. Now send this request and this is what the flag user has updated, और इसके अंदर हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो 200 है। मुझे लगा था ये रिस्पॉन्स चेंज होगा क्योंकि हम कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं। मेक ए पोस्ट रिक्वेस्ट
to login page with the username of THM and password of let me in। तो अब देखते हैं हमारा जो न्यू है वो है पोस्ट रिक्वेस्ट, और ये हम कौन से पाथ के लिए कर रहे हैं वो है लॉगिन। और उसके बाद जो कि बताया था मैंने आपको, यहाँ पे नीचे आएगा जो भी हम अंदर पैरामीटर इसके अंदर सेट करेंगे। तो पैरामीटर क्या है, हमें दो पैरामीटर सेट करने हैं। यूज़र नेम जो कि सेट करना है हमें THM, एंड वी हैव टू ऐड वन मोर पैरामीटर दैट इज पासवर्ड, एंड द वैल्यू ऑफ दिस पैरामीटर इज लेट मी इन। Save this and let's send this request, and here is our response, HTTP request master, and now I am the master of HTTP requests। And you can see that how amazing this room was, and we have learned a lot, and we also earned a badge that we are most likely to share in our social media handles, but I have already shared these। तो आपने देखा कितने इजी तरीके से हमने सारे एच टी टी पी रिस्पॉन्सेज, सारे एच टी टी पी मेथड्स, एच टी टी पी एस, एच टी टी पी प्रोटोकॉल्स, पोर्ट्स हमने पढ़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा गेमिफाइड और इंजॉयबल लेसन्स थे, जिनकी वजह से हमें एच टी टी पी जो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज जो है वो बहुत ही अच्छे से पता लगा। इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जैसे कि हाउ वेबसाइट वर्क्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल जो है लेसन है। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, मे बी दिस इज़ ए टास्क और मे बी दिस इज़ ए लैब दैट वी हैव टू सॉल्व इन द अपकमिंग लेसन्स। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट इन ट्राई हैक मी। सो अगर आप लर्न करना चाहते हैं इसी तरह से, इसी गेमिफाइड तरीके से, तो कीप कमिंग बैक टू दिस चैनल and give a thumbs up to our videos that I am making for you guys, and our upcoming lesson is how websites work। So तब तक के लिए bye bye and stay safe।